अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कप कहानी। आप देखते आ रहे हैं, हम इसमें वर्ल्ड कप देखते आ रहे हैं, उसमें क्या स्टैट्स रहे, क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान के वाली स्पेशल बात करेंगे। 92 का हमने जो है वो पीक टच कर लिया हुआ है। हमने देखा है किस तरह खास आपके अंडर फाइनली पाकिस्तान वन वर्ल्ड कप आफ्टर 1987 की डिसअपॉइंटमेंट, जिस पे भी हम बात कर चुके हैं। बट नाउ वी आर एंटरिंग सम ट्रिकी वाटर्स, क्योंकि जिस तरह हम आगे बात करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंसेज कैसी थी और क्यों थी। और सेकेंडली, लॉट ऑफ पीपल ऑफ आवर एज, उनके लिए 90s एक नॉस्टैल्जिया का एरा भी है। और जिसमें अक्सर आप किसी भी क्रिकेट फैन से बात करें तो वो कहता है कि यार हमें तीन में से दो वर्ल्ड कप तो कम से कम जीतने चाहिए थे, हमारा बर्थ राइट था। उसमें एक फैक्टर आता है कि 96 का वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड था लाहौर में, क्या बड़ी बात थी, जितना हम जीत सकते हैं कि लाहौर में। सेकेंडली 99 बिकॉज वी प्लेड द फाइनल। सो आज जो है मैंने फिर नवाब साहब को इसलिए तकलीफ दी कि आप आए 92 के बाद से 99 तक वर्ल्ड कप को डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, बिल्डअप देखते हैं, कैसी टीम रही है। सो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। छोटी सी एनीडोट से स्टार्ट कर लेते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप बात करें तो 96 में ये हालात थे कि 96 के वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले मैं स्टेडियम में घूम रहा था। और इट वाज नॉट जस्ट कि मैं अकेला घूम रहा था, बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे क्योंकि लाइट्स जल रही थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाइट्स लगी थी पाकिस्तान में। तो अवाम वहाँ पे देख रही थी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बत्तियां वेखन गए सी सारे। और बट द मेन थिंग वाज दैट दैट वाज द एटमॉस्फेयर, यू कुड जस्ट वॉक इन एंड देयर वाज अ सेलिब्रेशन गोइंग अराउंड। और अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, बट 96 का वर्ल्ड कप जितना शायद श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया था, तो दुनिया में सेकंड हैप्पीएस्ट मुल्क प्रॉब्ली उनके बाद पाकिस्तान था इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशंस। बट सर, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो साईं। और 96 से बात शुरू करते हैं। आपकी कोई इंटरेस्टिंग फॉन्डेस्ट मेमोरी 96 के हवाले से? Amat bhai, first of all, thank you so much for having me. Always a pleasure to be on. Always a pleasure to talk cricket with you. सर मैं भी फाइनल पे था. मैं भी उन बड़े लोगों में से था जो बात फंसा हुआ था. किसी उस जमाने में आपको पता है सेल फोन्स वर स्टिल ब्रांड न्यू, तो किसी को जो अंदर जा रहे थे उनको याद कराया कि प्लीज वाले साहब को बता दें कि मैं बाहर पहुंच गया हूँ. वो वापस आए, उन्होंने कहा जी पहले तो वाले साहब गालियां दे रहे हैं आपको, कितने लेट आए हैं. फिर उन्होंने मेरा टिकट पकड़ा, फिर अंदर गए. सीम्स ऑल ऑफ लाहौर वाज देयर. जिस तरह आप एक दिन पहले ग्राउंड पे थे, हम एक दिन पहले पेस पे थे. आपको याद होगा उस टाइम पे पेस मॉल वाज एवरीथिंग फॉर लाहौर. एंड श्रीलंकन क्रिकेट टीम वाज देयर. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मेरी जो बड़ी कजन है, शी स्पीक्स फ्रेंच. She was there talking to Chaminda Vas, and उनका attitude जो players का था, they were very calm, very relaxed. And Australian players की बड़ी, मैंने players की autobiography में पढ़ा था, बाद में वो कह रहे थे कि हमने अपने आप को कमरों में बंद रख के अपने साथ ज्यादती की थी. We became too caught up in all of this thing. And they felt it affected their performance the next day. तो personal anecdotes वही हैं सर, matches याद हैं सारे, watching the excitement in Multan. My mother was flying from Multan to Lahore. पहुंच के कहती हैं कि हाँ मेरे साथ टीम जहाज में कुछ लोग बैठे थे, कुछ गोरे थे. पता लगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी. हमने कहा थैंक यू अम्मी, आपने किसी की ऑटोग्राफ भी नहीं ली. So it was just amazing to see at close quarters, and the World Cup fever was definitely all over Pakistan. आप जहाँ भी रेस्टोरेंट्स पे भी जाते थे, वहाँ वर्ल्ड कप डील्स चल रही थी, लोगों ने सजाए हुए थे जितना आप उस टाइम पे कर सकते थे, जो आज की टेक्नोलॉजी नहीं है. So just wonderful memories, other than of course the games that we'll get to. And बस वही memories है सर. आई थिंक 96 जैसा, करेक्ट मी इफ यू डिसएग्री, बट 96 के बाद आई थिंक वो एटमॉस्फेयर हमें शायद देखने को नहीं मिला, बिकॉज 2001 के बाद तो लाइफ ही चेंज होगी हम लोगों की। बट 96 में कोक था वहां पे, फिर जुनून का जज्बा जुनून आज तक चल रहा है। फिर हम डिफेंडिंग चैंपियन थे वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान में। सो आई डोंट थिंक सिंस 96 हमें वो एटमॉस्फेयर कभी भी देखने को मिला है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का। नहीं सर, नहीं. And I think also to put it nicely, हमारे भाई we were untainted at the time. हमने मैच फिक्सिंग सच का सुना नहीं हुआ था. हमने उस तरह की क्रशिंग डिफीट्स नहीं देखी हुई थी. हमने वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखी हुई थी. आपकी टीम जो थी फॉर द बेटर पार्ट वाज डूइंग वेरी वेल, एंड जैसे आपने कहा वर्ल्ड चैंपियंस थे. So all of that was adding up, and then we just started almost semi-normalizing relations with India. उसके बाद आपने देखा सहारा कप काफी हुआ, काफी क्रिकेट हुई, शारजा में क्रिकेट हो रही थी. तो बिल्कुल आई थिंक दैट ऑल लेड अप टू दिस बिग क्रेशेंडो. बट जिसके बाद फॉल बहुत बुरी थी, और फिर उसके बाद 99 ने उस फॉल को माशाल्लाह ओवर द एज ही पुश कर दिया. एंड आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ अस रिकवरी टुक अ लॉन्ग टाइम. आई वुड से maybe the 2009 T20 वर्ल्ड कप पे रिकवरी जाके आपकी हल्की सी शुरू हुई. जी जी, क्योंकि अब अगेन हम वही जिस तरह पहले बात भी कर रहे थे ऑफलाइन के
नई जनरेशन, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट व्हाट दे नो. सो 2017 की बहुत बात होती है, बट फॉर मी ऑब्वियसली 2009 वाज अमेजिंग, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा आपको एक ट्रॉफी, वर्ल्ड कप देखने को मिला था. एंड टू बी ऑनेस्ट, हम दोबारा वर्ल्ड कप जीते भी नहीं सिंस 2009. बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल। स्टिल चैंपियंस ट्रॉफी. सर स्टार्ट करते हैं. मैं जो पहला आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा वो यही है कि हमारी जो कोर थी 92 की, वो 96 तक उसने कैरी फॉरवर्ड किया. तकरीबन सारे 92 के जो यंगस्टर थे उस टाइम के, वो खेल रहे थे उसमें. प्लस वी हैड एक्सपीरियंस लाइक मियादाद वहां पे थे, जिन पे आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन, कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि समवन, maybe someone like Basat Ali should have been playing in his place, perhaps, or someone else of that era जो ज़्यादा suited थे उस क्रिकेट के लिए. And then we move to 1999, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेजर शिफ्ट आया और ऑलराउंडर्स का एक ऐसा पूरी एक क्लास आई जो फिर हमें 99 की पीक पे लेके गई. सो आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन जो टीम हमारे डायनेमिक्स चेंज हुए थे फ्रॉम 92 टू लेट्स से 99. हमाद भाई, यूर राइट इन द सेंस कि 92 में बहुत ज्यादा मेन चेंज नहीं आया. आपने ऑफलाइन अभी पहले भी बताया था कि वही कोर थी, एडन सईद, अनवर एंड बकार यूनुस, हु वर पार्ट ऑफ द लैंडस्केप बट अनएबल टू प्ले फॉर डिफरेंट रीजंस. देखिए, जावेद साहब इज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन. जावेद मियांदाद, आई थिंक नोबडी डाउट्स दैट, बट बाय 1996 ही शुड नॉट. सेकेंडली, जब आप उनको पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर वापस लेके आए, आपने टीम डायनामिक में बहुत एक इशू क्रिएट कर दिया. उनको जावेद मियांदाद की क्लास और नॉलेज और लेवल का खिलाड़ी थर्ड मैन पे खड़ा है, छठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है. He was, a former captain, one of the all-time great players, especially in one-day cricket. Javed Miandad was a revolutionary of one-day cricket. So it hurt, and I think it hurt his legacy, and I think it hurt the team also. Basit Ali definitely had a coming of age batting performance against the West Indies in Sharjah. वो अलग बात है कि as usual Brian Lara decided to have a coming of age batting performance against Pakistan. But Basit would have definitely, especially Karachi की pitches पे, been a good option for us. एक और हमने चेंज देखा कि एक 92 के बहुत इंपॉर्टेंट कॉग जो 96 में पार्ट नहीं थे, वो मोइन खान थे. नाउ इन द करंट डे एंड एज, अगर हमारे पास ये डेप्थ होती, जो आई थिंक वो अलग बात है कि हमारे पास आजकल बहुत कीपिंग डेप्थ है, but we would have had Rashid Latif as your red ball specialist, Moin Khan as your white ball specialist. Rashid Latif took some incredible catches. उनकी agility, उनकी आप कह लें overall wicket keeping behind the stumps was amazing. But Moin Khan as a batsman was Moin Khan. So I think वो आपकी टीम में से missing था. और फिर आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बहुत सारा जो जनरेशनल चेंज है वो 96 के बाद आया. सकलैन मुश्ताक आए, शाहिद अफरीदी आए, फिर अजहर महमूद और शोएब अख्तर आए, फिर अब्दुल रजाक आए. तो वो चेंज आपको बाद में देखा, बट आई थिंक वी वर कैरिंग टू मेनी प्लेयर्स इन 1996 who had been part of 1992, and I think it affected us in the sense that younger legs would have made the difference. सर थोड़ी सी हम अगर बात करें कि हमारा जो बिल्डअप था फ्रॉम 92 टू 96 का जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें हम बात देख रहे थे कि टोटल पाकिस्तान ने रफली को 88 मैचेस खेले थे और उसमें 47 जीते हैं, 37 हारे हैं, 4 टाई हुए. सो ऑन पेपर इट्स रफली 60-40 कर लें, 55-45 के करीब कर लें. सो हम बहुत डोमिनेंट नहीं थे उसमें, बट देन अगेन वी वर नॉट बिलो पार. व्हाट वुड बी योर कमेंट? I feel that one of the things we have to take into consideration, obviously, हमाद भाई, इसके आपने कौन से लेवल पे परफॉर्म. वर्ल्ड कप के फौरन बाद we had a really brilliant time for about 3 or 4 years in Test cricket. But one day cricket में we were struggling. इंग्लैंड से जाके हम इंग्लैंड में फॉरेन सीरीज जो हारे, वो बहुत सारे अंग्रेजों ने कहा, I was in England that summer, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार वर्ल्ड कप फाइनल भी हमें जीतना चाहिए था. टेक आउट द फाइनल, हम तुम्हें तब से मारी जा रहे. हमने देखा कि उन्होंने ट्रेंट ब्रिज पे रिकॉर्ड स्कोर किया. 55 ओवर गेम्स थी, कुछ 60 ओवर गेम्स थी, बट वी लॉस्ट 4 गेम्स एंड ओनली वन वन. फिर हम वर्ल्ड सीरीज में गए और वहां पे वेस्ट इंडीज ने हमारे साथ जेनरेशनल ज्यादतियां की. 43 पे ऑल आउट कर दिया, 71 पे ऑल आउट कर दिया. वेस्ट इंडीज के साथ ही साउथ अफ्रीका में ट्राई सीरीज खेलने गए, वहां 77 ऑल आउट हो गए. We were struggling, and I think maybe that was one reason used for removing जावेद मियांदाद साहब कैप्टनसी. आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट को पॉइंट दिया, तो उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि इन द 14 मैचेस आफ्टर 92 दैट मियांदाद साहब कैप्टन पाकिस्तान इन वन डे क्रिकेट, we won 3, we lost 10. So I think we were really struggling as a side coming up, and then obviously हमने देखा कि हमारी वही जो continued success थी 95 96 से पहले, वो थी शारजाह. We would go to Sharjah, we would play India, Sri Lanka, Zimbabwe. आपको याद होगा सिंगापुर में भी सिंगर सीरीज हुई थी, श्रीलंका में भी कुछ टूर्नामेंट्स हुए थे. वहां हम कंटिन्यूसली अच्छा खेल रहे थे, बट वही आपने जो भी आपका
पाकिस्तान का उस टाइम पे आपका ऑब्वियसली होता था कंसोलिडेट एक्सेलरेट एट द एंड। उसमें आपके पास कौन था एक्सेलरेट एट द एंड करने के लिए? वसीम अकरम थे या आपके पास मोइन खान थे? इस वर्ल्ड कप में एक खेल नहीं रहे थे और आप फिनिशर के लेवल पे यू ब्रॉट इन अ मैन प्लेइंग हिज सिक्स्थ वर्ल्ड। So I think that was one of the reasons that we definitely struggled and we did not go into it. But like you said, defending champions, playing at home, Imran Khan's protege captaining the side. Many people thought it would be a continuation. And if we look at the numbers, अभी हम आगे numbers पे बात करते हैं, it should have been a continuation. वो अलग बात थी कि I think we went into the tournament not realizing the importance of things. Topping the group was integral for Pakistan. Making that mistake, losing to South Africa, and then ending up with a pressure quarter final against India, that ended up being our undoing. I think had we not had that game, I would have been pretty confident for Pakistan to go far. सो जनरली जस्ट अ क्विक हम एक देख लेते हैं इससे पहले कि हम आगे चलें। पाकिस्तान ने पहला मैच यूएई से खेला था, हम जीत गए थे 9 विकेटों से। सेकंड मैच आप जिस तरह स्क्रीन पे अपनी डिटेल देख भी रहे होंगे, सेकंड मैच वाज विद आयरलैंड, सो पाकिस्तान अगेन जो है वो सेकंड मैच अपना जीत गया था। थर्ड मैच है जिसके आप जिक्र कर रहे थे, we scored 242 against South Africa and then we lost to them with by 5 wickets, and it was kind of a Yeah. comprehensive defeat क्योंकि they chased it in like 44 overs, so it was not like a Yeah. close game जिसपे हमने बहुत किया हो, well fought. Then we played England. Pakistan won comprehensively, 249 का टारगेट हमने 3 विकेटों पे चेस कर लिया था। सईद अनवर was one of the consistent performers throughout this World Cup. Then we beat New Zealand, and finally then we met India in quarter final. So before moving to quarter final, we were doing reasonably well. अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल Yes. रहे थे। और जब मैं स्टैट्स देख रहा था तो जिस तरह सईद अहमद परफॉर्म कर रहे थे, मुश्ताक अहमद परफॉर्म कर रहे थे, हर कोई चिप इन कर रहा था। सो इट वाज नॉट कि एक बंदा उसको लीड कर रहा है। और फिर आता है हमारा क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो ता क़यामत खत्म नहीं होगी, वसीम भाई किताबें लिख लें, हम पॉडकास्ट कर लें, दुनिया में कोई भी आके ये बात बता दे कि उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल क्यों, क्वार्टर फाइनल क्यों नहीं खेला। ऑब्वियसली दैट प्लेड अ पार्ट। उसके बाद उसमें अक्सर लोगों को, मुझे, मैं जो करेक्ट करता हूँ लोगों को, वो हमें याद होता है कि अच्छा, मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं जी हम बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड वी वुड हैव चेज्ड इट अगर आमिर सोहेल उस पॉइंट पे आउट ना होते। मेरा काइंड ऑफ काउंटर पॉइंट होता है कि उस जमाने में 288 चेस करना वाज अ ह्यूज टास्क एनीवे। आप अच्छा Yes. स्टार्ट करते, आप बाद में स्टार्ट करते, probably if you ask me, you lost the game जब वकार यूनुस को 22 रन पड़ गए थे। Of course. if you take out Absolutely. so if you take out those 22 runs तो आपका टारगेट बहुत कम डॉन्टिंग हो जाता है, एंड देन परहैप्स हम लोग जो हैं वो ज्यादा होपफुल होते हैं। योर कमेंट ऑन दैट एंड ओवरऑल मैच। हमाद भाई देखें, अगेन उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एब्सोल्युटली आई थिंक एनीथिंग अबव 250 वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेस एट दैट टाइम। तो इंडिया का जो टोटल था वो तो ऑब्वियसली बहुत स्काई हाई था। अब अगेन हमने देखा कि आमिर सोहेल के पास जो आइडिया था टू यूज वकार यूनुस, देखें वकार यूनुस ऑब्वियसली एट दैट टाइम आल्सो ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क विदाउट वसीम अकरम एट द डेथ। वकार यूनुस पे रिस्क थी आपको। हमने आगे देखा कि उसके बाद वसीम भाई ने वकार यूनुस को कभी डेथ पे नहीं यूज किया उस मैच के बाद। आपने देखा कि जैसे वसीम भाई वापस आए कप्तानी में तो वी स्टार्टेड यूजिंग सकलैन मुश्ताक। टेकिंग पेस ऑफ द बॉल वुड हैव बीन अ गुड सॉल्यूशन। We didn't do it. Vakar Bhai went for runs. Obviously, Jadeja was probably looking to utilize that. That shifted the momentum, which for a very long time. And getting back to one of the most stunning moments, I think Azharuddin ka catch जो Rashid Latif ने पकड़ा था उस मैच में। Then you're right in the sense that obviously आपने start अच्छा किया, but that is giving no respect to an incredible Indian bowling lineup that they would not have been able to continue that way. वो होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलते थे। आपने अच्छी स्टार्ट जरूर की, बट आपकी वीक अंडरबेली ही आपका मिडल ऑर्डर। अनलेस वी थिंक सईद अनवर एंड आमिर सोहेल वुड हैव चेस्ड 280 प्लस बाय देमसेल्व्स, जैसे ही किसी एक ने आउट होना था वो प्रॉब्लम होनी थी। फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था जो कि मेरी नजर में हमाद भाई लिटरली 2007 के वर्ल्ड कप तक चला। After 1992 we never saw the best of Inzamam ul Haq in a World Cup. Inzamam ul Haq, the non-World Cup batsman, was on another level. अभी रिसेंटली मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें वीरेंद्र सहवाग, who has no love lost when it comes to Pakistan, said कि भाई you cannot have the conversation of the best middle order batsman in the world and say that anybody was better
देन इंजमाम उल हक, बिकॉज वो उस टाइम पे 8 या 9 रन के रिक्वायर्ड रन रेट को भी आराम से चेस कर रहे थे. तो आई थिंक 96 में we did not see the best of इंजमाम, 99 में we did not, 2003 में we definitely did not, and 2007 में as captain. So I think आपका middle order misfire कर रहा था. Salim Malik, we never saw the best of again. We never saw the best of him in 92 also. So could playing Basit Ali with his the little needle that he had to him, you know. Basit भाई भी obviously कराची आए थे, तो फिर उनमें एक वो fighting spirit होता है. So could playing him, could playing Moin Khan have given us a better option? In hindsight, one can look at it and say, ideally, it might have. I just think you're absolutely right that once the score got to a certain amount, especially without Wasim Akram, we were not equipped to chase that score. And देखें, आप जावेद साहब को छठे नंबर पे भेज रहे हैं, वो आपके टोटल को थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी दे देंगे, बट ओनली प्राइम 1980s जावेद मियांदाद might have been able to chase that. 1996 जावेद मियांदाद was not going to chase that. So I think जैसे ही आपने कहा आपको वो 22 रन पड़े, it was over for most of us, and I think जो गाना हम दिन में 50 दफा सुनते थे, वो अगले 20 साल हम में से किसी ने नहीं सुना. इसमें हम देखते भी आएंगे आगे वर्ल्ड कप में, देखेंगे कि जब मेरे से अक्सर ये डिस्कशन होती है कि इंडिया को हमने आज तक नहीं हराया 50 ओवर में और ये और वो, और हमारा ये बड़ा चांस चांस था 96 में. सो मैं हमेशा कहता हूँ यार 99 में यू आर चेजिंग 220 रन और समथिंग अगेंस्ट इंडिया. Yes, हम yeah, उस पे yeah, भी 180 पे आउट हो गए थे. इवन 92 में हम 210 220 को चेस कर रहे थे. तो 290 in India in quarterfinal was a big ask. बिफोर में वो मूव बियॉन्ड 96, एक और कमेंट जो आपको लेना चाहूंगा, अर्लियर वी मिस्ड, मतलब आई वांटेड टू आस्क, मैं भूल गया था, वो ये था कि 92 से 96 का आपने ब्रीफली उसको डिस्कस भी किया है, बट एक कैप्टनसी और प्लेयर पावर का भी हम देखते आ रहे थे. पूरा एक जो एपिसोड्स चली थी, पूरा सीजन चला था, लेट्स से दैट, एक एपिसोड नहीं, उस जी सीजन बिल्कुल. गेम ऑफ थ्रोन्स. गेम ऑफ थ्रोन्स, और ये अनफॉर्चुनेटली 99 तक चलता रहा है. और अभी तक हम लोगों ने इस साल अभी तक इसको रोका हुआ है, वरना वर्ल्ड कप साइकिल से पहले बोर्ड प्लेयर्स कैप्टनसी इशू अगर ना आए तो वो लगता नहीं कि हमारा वर्ल्ड कप ईयर है, अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल. तो वो भी जरा देखिएगा कि 96 तक हमारे जो हालात लग रहे थे, एंड नॉट टू फॉरगेट कि 93 94 से वो हल्की हल्की जो मैच फिक्सिंग की बाज़िश थी वो शुरू हो गई थी. और बिल्कुल. 96 के बिल्कुल. बाद फिर इसने बहुत पीक लिया. तो 96 का एक फॉल आउट ये भी था कि आज तक उस मैच को फिक्स भी कहा जाता है या लोग ऑफ ब्लेम किए कोर्स. जाते हैं. ऑब्वियसली एक्यूजेशंस हैं, बट जनरली दैट्स द परसेप्शन. इट इज हमारे भाई. देखें, उसमें एक तो आपका कैप्टनसी का मैरी गो राउंड शुरू हो गया. मैं भी जब आपकी तरह अपनी रिसर्च कर रहा था, तो when I was looking at the people who captained Pakistan from the time of 92 to 99, so you have Amir Sohail, Javed Miandad, Moin Khan, Ramiz Raja, राशिद लतीफ, सईद अनवर, सलीम मलिक, वकार यूनुस, वसीम अकरम. तो एक तो आपकी टीम ही यहाँ बन गई ना. ओपनर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है, बॉलिंग भी है. तो एक तो देखें, आई थिंक you'd be hard pressed to find any other side that had that many captains in this entire era from 92 to 99. 92 टू 96 में हमने देखा कि इंट्रीग शुरू हुई. वसीम अकरम को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने जावेद मियांदाद को हटाया, फिर वकार यूनुस को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने वसीम अकरम को हटवाया, फिर वापस ब्लेम किया जाता है कि सलीम मलिक आ गए, फिर सलीम मलिक को राशिद लतीफ को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने सलीम मलिक को हटाया, फिर वापस ब्लेम किया जाता है कि वसीम अकरम वापस आ गए. अब एक तो ये मैरी गो राउंड चलता रहा. वर्ल्ड कप 96 के फौरन बाद रमीज राजा साहब कैप्टन बने. आपने इंडिपेंडेंस कप की 2 सीरीज खेली, आप वहां इतना बुरा खेले, उनको हटा के फिर आपने सैयद अनवर को कैप्टन बनाया. सैयद अनवर कैप्टन बने. शारजाह में एक टूर्नामेंट में आप गए, मोइन खान आपके कैप्टन थे. मोइन खान को चिकन पॉक्स हो गई, तो सैयद अनवर ने टेक ओवर कर लिया. सैयद अनवर इंजर हो गए, तो थर्ड चॉइस आ गए. थर्ड चॉइस हो गए, तो फिर आई बिलीव आखिरी मैच में आपके जो भी फोर्थ चॉइस थे, एंड आई बिलीव देयर वाज अ टाइम टोनी ग्रेग वाज कमेंटिंग एंड ही सेड दैट देयर आर 7 former or current Pakistan captains on the field right now. That cannot make for a good team environment. So I think वो intrigue played a big part in it. जो इसलिए आजकल की जब हम बात करते हैं कि जब हम लोग कैमराडरी को कहते हैं कि it's a very important thing, लोगों को समझ नहीं आती, वो understand नहीं करते. In a team where you have people with captaincy potential like Shaheen, Shadab and Rizwan, for them to put their weight behind Babar and be 100% supportive of him is a very big thing. बिकॉज पाकिस्तान में तो हमारा भाई, आप कैप्टन है, ओपनिंग करने जा रहे हैं, आपको गारंटी नहीं है कि अगर आप आउट होकर वापस आते हैं कि आप बॉलिंग के टाइम पे कैप्टन भी होंगे. ये जमाना चल रहा है. सो आई थिंक इट डेफिनेटली प्लेड अ वेरी बिग पार्ट. And the captaincy merry-go-round did not help because I believe that he was not captain very long before the World Cup, Wasim Akram.
and not again very long after it. The only long run that he got was from 98 to 99. Right. And at that time, if you look at it, he did mention that that was the best run we had as a team. And when he said कि हम वर्ल्ड कप जाने तक मैच नहीं हारे, आप एक्चुअली मैच नहीं हारे थे, और वो जो श्रीलंका वाली एक जबरदस्त आपने टाई कर ली थी. So I think it was an example of why you should have had continuancy in the captaincy. Hmm. But unfortunately, आपको पता है Pakistan does not work with things like that. एंड आई थिंक परहैप्स जिस तरह आपने पहले जिक्र भी किया था कि वो ओल्ड गार्ड भी 99 के फिर आसपास तक जा चुका था. सो जो वसीम भाई के पास जो टीम थी वो काइंड ऑफ वो टीम थी जिस तरह इमरान खान को अपनी टीम मिली थी जिसमें वसीम और वकार उस टाइम हुआ करते थे, तो इनको फिर बिल्कुल. शोएब अख्तर और अब्दुल रजाक और अजहर महमूद. और आई रिमेंबर कि इनकी जो किताब अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी और फिर वो रिव्यू करने का ऑनर भी हुआ, उसमें भी स्पोक वेरी फॉन्डली ऑफ दैट एरा. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो एक अपनी कैप्टनसी को जब एंजॉय किया था. So that was 1999, and perhaps that's why he never wanted to give it up after World Cup as well, क्योंकि he believed in that team. So moving on to 1996 and 99 तक, uh, क्विक हम एक लुक लेंगे स्टैट्स के ऊपर, फिर विल डिग डीप इनटू इट. हमने 106 मैच खेले थे, ओडीआईज 54 जीते, 49 हारे. अगेन हमारी विन रेशो 1.1 की है. बट द गुड थिंग वाज दैट वी स्टार्टेड ऑफ विद एन एक्सीलेंट सीरीज विन, जिसकी आप मैंने शुरू में जिक्र किया, शर्ट पहन के ही बैठे हैं. So that is probably Pakistan's finest victories, and in Australia specifically, until हम जब फिर वो 2002 की 2-1 सीरीज जीते थे, that I also rate बिल्कुल. it very high. बिल्कुल. वो भी बिल्कुल. बहुत अमेजिंग किस्म की विक्ट्री थी. But this was against Australia, obviously at his home ground, and a pretty decent West Indies who might have made it to the World Cup final अगर वो शेन वॉन और उनका एक एक्सेप्शनल कोलैप्स ना होता 96 में तो. आप एक चीज देखें, हमारे पास when I was doing my research, so from 92 to 99, you played 16 one days against Australia and won only 5, lost 11. You played 27 against the West Indies, won 10 and lost 17. So considering आपने इन दोनों टीमों को रेगुलरली इस टूर्नामेंट में बीट किया, इसके अलावा आपने उनको बीट ही नहीं. ठीक है जी. That's one reason why it was an important series. Another reason is that it was coming of age of people like Saklan Mushtaq. We saw Muhammad Zahid, who could have gone on to be one of Pakistan's all-time greats. We saw Azhar Mahmood, Abdul Razak, जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में तो वो नहीं थे, बट इससे अगले वाले में जब वो आए उन्होंने इंडिया वाली टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, he became the bowler. Sachin Tendulkar said he fared the most. शाहिद अफरीदी केम इन, आपकी फील्डिंग में अपटेक आई, वसीम भाई की कैप्टनसी में अपटेक आई. सो आई थिंक दैट वाई देखें दो चीजें हुई उस टूर्नामेंट में. एक तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज किया, दूसरा had we not won that tournament, I don't think Australia would have changed the way they planned to change for 99. Australia absolutely threw the book at everything. Mark Taylor was set to be captain till 99. वो guaranteed थी. ऑस्ट्रेलिया से ये नहीं हो सकता, हम होम पे सीरीज हार गए. Steve O was brought in. They changed the opening tactics. Adam Gilchrist was brought in. They changed everything. So maybe in a way we were the architects, as we always are, of our own downfall. उनको tournament जीतने देते हमें वो problem ना होता. But again, अगर एक और चीज मैं देखूं, that I wanted to bring up हमारे भाई, which is part of the problem that we had. If we look at from overall from 92 to 99, तो हमने जो 209 वनडेज खेले, उसमें से हम 110 जीते, 92 हारे. उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड्स रखे. ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के मैंने आपको बताया. इंग्लैंड वी प्लेड 12 मैचेस, won 4, lost 8. South Africa we played 21 matches, won 7, lost 14. The problem here is we won our first 6 matches after the first one that we lost. We won the next 6 matches against them. Then we lost the next 14. स्टीव वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा वर्ल्ड कप 99 फाइनल का एक ही प्लान था पाकिस्तान के खिलाफ, एंड मैंने टीम स्पीच में भी यही कहा, प्ले लाइक साउथ अफ्रीका. पाकिस्तान हैड लॉस्ट द लास्ट 14 मैचेस टू साउथ अफ्रीका. सो हम बिग टीम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया, जिनको हम ऑब्वियसली उस टाइम पे 90s में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, वी वन 23, लॉस्ट 15. न्यूजीलैंड जो बेचारे मुझे लगता है हमारे पास आते थे मार खाने के लिए, शारजा में मार खाते थे, पाकिस्तान में मार खाते थे, चले जाते थे. एंड वी हैड I believe we played a very big role in Sri Lanka's improvement, because we won 19 but lost 17 to Sri Lanka, and Sri Lanka was able to do a lot of their experimentation ahead of 92, ahead of 96, sorry, against both in Australia and against us. तो overall record हमारा इस टाइम पे इतना अच्छा नहीं है जितना शायद नॉस्टैल्जिया हमें याद करा.
मुझे तो नहीं, मुझे मैंने तो ब्लॉक आउट किया हुआ है वो सारी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाली हारे, मुझे तो सिर्फ ये वाली सीरीज याद है. So I think another problem that we had at that time is we were not overall playing that well. But in the World Cups, if you go into the World Cups, the two World Cups of '92 and of '96 and '99, you won 10 games and lost six. उन six में से क्या, चले एक तो आप इंडिया से तो दो आपने हारने ही थे, एक क्वार्टर फाइनल था, चले साउथ अफ्रीका से आपने हारना था, आप हार गए. एक मैच आप बांग्लादेश से हारे, जो कि लेट्स वाज इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम. एक मैच आप फाइनल हारे. Take away that quarter final and take away that final and take away those games, you actually played very well. Crunch moments, man, when it came to the big moments, is where we failed. And I think that's something we will always have a regret about, to have a team of this caliber and for them not to cross the line at the crunch moments. I think that's disappointing. That is something where you missed someone like Imran Khan or like Javed Miandad. Obviously, they were generational players, the best of all time. But I think that we were not able to translate taking into that pressure. एक और बड़ा interesting stat था, which I found to be a lot of fun. Hamad bhai, we played 22 finals in tournaments where there were more than three teams. We lost 13 of them. We won 9, we lost 13. क्लियरली. और इसमें आपको याद होगा हमने वो इंडिया से आई थिंक हम वो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस कप वाला फाइनल हारे थे, फिर हम एक और काफी ज्यादा ट्राई सीरीज में फाइनल्स हारे थे. सो आई थिंक हमारा वही प्रॉब्लम था इस जनरेशन का. दे वर अनएबल टू गो ओवर द लाइन. एंड नाउ लुकिंग एट ऑल ऑफ इट, द 99 फाइनल मेक्स अ लॉट मोर सेंस. वी जस्ट डिड नॉट हैव इट इन अस लास्ट हर्डल को क्रॉस करने के लिए. सुपर सिक्स स्टेज में भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश से हार गए. नहीं, बांग्लादेश तो आई थिंक हम सॉरी लीग राउंड में हार. साउथ अफ्रीका से हार गए, इंडिया से हार गए. सो यू नो, आप मोमेंटम अगर छोटा टूर्नामेंट होता था जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला है, और exactly, and I think we would build up momentum in smaller tournaments with not a very large time frames. और बड़े tournaments में अगर हम जल्दी peak कर जाते थे, तो then we went flat. And I think that's what happened to us in '99 also. Peaked early. मैं वही देख रहा था कल, वो हेडिंगली वाला मैच फाइनल होता ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, things would have been all right. हाँ, दैट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो अपने ओडीआईज पाकिस्तान ने खेले हैं, उसमें स्टैंड अलोन ओडीआई के तौर पे इट्स अ ग्रेट विक्ट्री. बट आई थिंक वो जो नॉस्टैल्जिया की आप बात कर रहे थे, वो प्रॉब्ली यहीं से आता है, क्योंकि वी ऑल सॉ देयर मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस इंडिविजुअली. वो कार यूनस आते हैं, हम लोग वो 180 चेस कर रहे हैं, 130 फॉर 2 हैं, सडनली 150 में मैच खत्म हो जाता है. 20-30 रन में वी यूज टू रैप इट अप. जिस तरह आपने उस मैच Yeah, की बात yeah. की, श्रीलंका वाला जब हमने टाई किया था, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू इमेजिन एनी अदर सिनेरियो जहां पे कोई और टीम वो मैच वहां से टाई भी कर सके. बट समहाउ वी Eight हैड wickets दैट for 28 runs. 8 wickets for 28 runs. The world we had champions. जी, and we always had that belief. But in between, अब मुझे इसलिए अब याद आता है, मेरे ख्याल है 194 वाला जो हमारा टूर्नामेंट था सईद अनवर ने जिसमें किया था, हम उसका फाइनल हार गए थे. अब आप एशिया कप की हाइलाइट्स निकालते हैं रीसेंट मेमोरी बिल्कुल. में, तो हम हमेशा शाहिद आफरीदी के मैच निकालते हैं, वो जिसमें वो छक्के मारे हम जीत गए. बट वी फॉरगेट दैट हम उसका फाइनल हार गए थे, इवन ड्यू बिल्कुल. फवाद बिल्कुल. सेंचुरी भी की थी. सो आई थिंक इन द एंड हमें मोमेंट्स याद रह जाती हैं. इट मेक्स अ गुड हाईलाइट पैकेज, बट अदरवाइज वी स्ट्रगल्ड अ लॉट. अच्छा, इस पे फिर वही बात है कि दोबारा मैं उस पर कमेंट चाहूंगा कि इसमें फिर ये बात भी तो आती है कि थ्रू आउट 99 तक तो ये बहुत ज्यादा मसला बन गया था मैच फिक्सिंग का, एलिगेशंस का, और ये वही प्लेयर हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. एंड देन वी हैड समवन लाइक एजाज अहमद और जो सलीम मलिक, जो 99 का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, एंड दे आल्सो प्लेड 1992 का वर्ल्ड कप. सो परहैप्स वो भी आपके काफी बड़ा एक पार्ट था कि वी स्टिल हैड सम डायनासोर्स. Of course we did. देखिए ना, आपने बायलैटरल्स में 74 मैचेस खेले 92 to 99. 40 जीते, 30 हारे. आप वर्ल्ड कप में, मैंने आपको बताया, 10 जीते, 6 हारे. टूर्नामेंट फाइनल्स आपने 9 जीते. अब देखें, you are you're carrying Salim Malik, who was one of your most successful captains, I might add. He won 21 games, lost 11 games. The match fixing specter, I think, haunted him more, obviously, because he was convicted, than it haunted Wasim Bhai. Now, what are you doing with a player who has been a successful captain, done very well for you, has been accused of match fixing? अब 99 में सलीम मलिक की मुझे कोई जगह नहीं नजर आ रही.
ठीक है, अब इजाज अहमद को आप रखते थे बिकॉज ही वाज वन ऑफ योर बेटर फील्डर्स, बट जब आपके पास अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स आ गए थे, जब आपके पास मोइन खान बिहाइंड द स्टंप्स है, यू हैव अ फार स्ट्रॉन्गर एंड टफर बैटिंग यूनिट. व्हाई इज इजाज अहमद? इजाज अहमद उससे पहले आई कैन अंडरस्टैंड 96 तक आई कैन अंडरस्टैंड. So you were carrying dinosaurs. Vakar Yunus was unable to get into the team या because you used to go with obviously with Wasim Bhai and Razak and Shoaib Akhtar and Saklan Mushtaq. But ठीक है, incredible depth to have. But you have to look at it कि आपने क्या domestic performers को या दूसरे performers को opportunity नहीं दी. 96 के World Cup में अगर मैं देखूं तो I remember at that time Amir Nazir was incredibly well regarded locally in Pakistan. Yet Atar Rahman was playing. Never made any sense to me. Atar Rahman at the highest level, hard worker, but a very limited bowler. Amir Nazir had a little bit to him. उनका record पाकिस्तान में बहुत अच्छा था. उनको आपने नहीं खिलाया, तो वही problems हमारे भाई selection intrigues. जैसे आपने बताया, ये सारे players एक दूसरे को एक दिन accuse कर रहे हैं, अगले दिन इकट्ठे कर रहे हैं. किस तरह का match environment हो सकता है? किस तरह का environment हो सकता है? Where Rashid Latif is saying कि all of these guys मैं कुरान पे हल्का उठाता हूँ, ये सारे fixers हैं. अगले दिन वही उनको कैप्टन करना है. So I think वहां पे unfortunately we suffered at that time. I believe it was the BCCP, the Board of Cricket Control in Pakistan, and we had very weak management, and we just did not handle it. And फिर वो जस्टिस कयूम रिपोर्ट में भी बाद में वही आया कि हमने बहुत सारा डेफरेंस देते रहे प्लेयर्स को. We definitely harmed ourselves. अगर आप मेरे से honestly पूछें, बिल्कुल 92 to 99 में हमारा बर्थ राइट था. जो नहीं जीतना चाहिए था वो जीत गए, जो दो जीतने चाहिए थे वो हम नहीं जीते. I think that's how we did it. It was the will of Imran Khan and the experience of Javed Miandad and the brilliance of Inzamam and Wasim Akram that carried you over the line in 92. But you have to see Pakistan as favorites for 96 and 99. And to lose both of, देखें ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप तो मैं आपको एक मैच बता सकता हूँ, वो तो बाहर निकलने वाले थे. They went from losing to winning 8 games in a row. हम लोग कहते हैं काश साउथ अफ्रीका फाइनल में आता. साउथ अफ्रीका ने तो फाइनल में हमें बहुत बुरी तरह मारना था. So the या problem remains for us, and I think we just did, and I think why it's very important to talk about the current day and the fact that there is such camaraderie between the players is to remember days like this, Amanda. In time over, there's so many tournaments and matches we could and should have won, but a fractured dressing room, जिसमें अभी हम discuss कर रहे थे, at one point 7 आप वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड में कैप्टन्स थे. वसीम अकरम तो है ही है, सैयद अनवर भी कैप्टन कर चुके हैं आपको. आपके पास सलीम मलिक भी है, आपके पास वकार यूनुस भी है. अब हाउ इज इट नॉर्मल फॉर अ कैप्टन टू गो इनटू अ साइड वेयर एटलीस्ट 4 guys ऑन द फील्ड आर फॉर्मर कैप्टन्स, जिनको या उन्होंने डिपोज किया, जिन्होंने उनको डिपोज किया. सो आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस इन अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन आल्सो. एंड देन ऑब्वियसली जब गेम हारते थे, मैं तो आज तक, हम कोई भी मैच हार जाए तो कहता हूँ फिक्स होता है, सिंपली बिकॉज इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस. We have started not believing that we are capable of losing games. We believe we only lose games when things are fixed. But it was a very tough time for us that way. And I think if we look back at it now with hindsight, while you're absolutely right that कुछ individual performances बहुत incredible थी, हमारी team performances काफी middling थी. हम कनाडा में जाके काफी ordinary Indian team से आमिर शेर की कप्तानी के नीचे सहारा कप भी 4-1 हारे. 4-1 Which I हारे. don't, yeah, I mean, that was a not the Indian team. Indian team by 99 had become much better, and they would go on to get better under Ganguly. But there's no way you should have lost to that Indian team. So I think इससे we had a सर lot of problems. एक और मुझे बल्कि याद आया है कि आपको अभी हम टेस्ट में नहीं घुसे. पाकिस्तान का जो होम टेस्ट सीजन और रिकॉर्ड है 90s का, आई रिमेम्बर मैं उस टाइम स्कूल में Mashallah. था, हमारा स्पोर्ट्स डे था. तो आमिर सुहेल जो थे वो हमारे उस टाइम कैप्टन थे और वो चीफ गेस्ट थे. सो आई थिंक वो हमारी कोई ड्रैग रेस समथिंग थी, उसमें मैं को थर्ड आया था. तो अब आई वाज एक्सपेक्टेड, मैंने ऑटोग्राफ लिया, तस्वीरें और सेल्फियों को तो उसमें ज़माना नहीं था, बट आई स्टिल हैव दैट ऑटोग्राफ समवेयर. तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा जी आमिर भाई भी ट्रॉफी देंगे, कोई तस्वीर खिंचेगी, मैं भी जाके कुछ 4 जगह शो मारूंगा, मैं आमिर भाई को जानता हूँ. आमिर भाई ने ऐलान किया कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे प्रैक्टिस सेशन में जाना है क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज हो रही है. सो मैं सिर्फ वो फर्स्ट को इनाम दूंगा, वट एवर दैट केस. तो खैर उन्होंने वो दिया और वो चले गए. वो सीरीज थी जिम्बाब्वे के साथ, और वो जी सीरीज भी जी. बाद में हम टेस्ट सीरीज हार गए थे. Sir, one तो nil. मुझे 1-0. हमाद भाई, अगर आप मेरे से पूछें, so I believe I read a stat the other day. It had been posted by the brilliant Hassan Chima कि हम 80s में एक सीरीज नहीं हारे, and then you come into the 90s at home. I think हम बहुत मुश्किल से कोई सीरीज जीते थे. ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, श्रीलंका से हम हारे,
अगर साउथ हम अफ्रीका से हारे। 99 तो साउथ अफ्रीका से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, 99 2000 को अगर आप ऐड 2000 में डाल लें तो इंग्लैंड से भी हार गए. सो सिवाय न्यूजीलैंड के and the only great test achievement we had at home in the 90s was whitewashing the West Indies. वेस्ट वो इंडीज। and I think वो West Indies का not losing to Australia in 95 and ending their 15-year record. I think losing 3-0 to Pakistan is when it confirmed that their legacy is not what. बट दैट्स आई थिंक अ कन्वर्सेशन फॉर अदर डे। ये हम जिस तरह चलेंगे, एंड होपफुली वी वुड लव एंड रिक्वेस्ट यू टू कम बैक एंड कीप दिस सीरीज गोइंग। हमेशा हासिल. बट 2003 में भी हमें काफ़ी इन चीज़ों की एक्सटेंशन नज़र आएगी जो हमने 99 में बात की है, और उसके बाद फिर कुछ कपल ऑफ अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड कप्स, एंड देन वी हैव 19 एंड 23। बट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज हमने जो है एक बड़ा क्रूशल दुखती रग को जो है हमने एड्रेस किया है। देखिए, और ये स्टार्ट हुई थी कन्वर्सेशन ट्विटर पे, एक थ्रेड पे, कि बेस्ट टीम कौन सी थी जो पाकिस्तान को, जिसको जीतना 99, चाहिए था, नहीं। एंड 99, 99. 99 वाज हम दोनों का कंसेंसस। हमारा भाई आप देखें ना, आप 99 में मुझे वीकनेस दिखा रहे. आई मीन इफ यू लुकिंग एट दैट एरा, एक एंकर तो होता ही था, वजाहतुल्लाह वास्की हो गए. Said Anwar was the best opener in the world in the 90s. I will not hear anything. Jayasuriya का impact बेहतर था. Said Anwar was your big game. कंसिस्टेंट, या आप आपने आपने तब एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बट आप शायद अफरीदी से भी ओपन कर सकते. ठीक है, now you come into 3, 4, 5. One important player, very important player, which who I feel we should have used in '96 instead of, maybe he got left out instead of Miadad Saab, was then Yusuf Yohana Muhammad Yusuf. Incredible player, very important to us, great running between the wickets. इंजमामुल हक आ जाते हैं आपके पास. चले इजाज अहमद को आप रख लें. आपके पास अब्दुल रजाक एट 3 was an incredible punt by Wasim bhai. Inzamam comes at 4, Yohana comes at 5. You have the option of Moeen, Azhar, Wasim Akram at 6, any of the two for the next position, 6 to 8. Saklan Mushtaq, no mug with the bat. Shoaib या Akhtar comes in, blazing guns. मैं आपको अभी भी इस टीम में मेरे आपके पास जगह बनी हुई है. You can put in someone like Salim Malik, you can put in someone like Waqar Yunus, you can put in someone like Mushtaq Ahmed. आपके पास इतनी ज्यादा डेप्थ थी उस स्क्वाड में. And I don't believe any other team has gone into a World Cup with this many bowling options. Left arm fast, right arm super fast, right arm very fast, two kinds of leg spin, off spin, या and then उसके अलावा आपके पास different kind of. I think the bowling attack was the most complete that any team has ever had in a World Cup. आप अगर आमिर सोहेल को डाल लेते तो आपके पास लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी हो जाती. So I think 99 में दुख ही ये होता है कि we have never had a team of that, and most of them at the peak of their career. It's quite laudable. 99 में very few of them were newcomers. In the sense that newcomers भी थे, Razak and Azhar, they performed from the minute they joined the team. That team, Ahmad bhai, in 99, that team should have been world champions, because अगर हम देखें तब से लेके आज तक आपको वो टीम नहीं मिली in terms of 50 over 10. I know आजकल की हम टीम जो हमारी है उसकी बात होती है, but a lot of them are not at that stage of their careers where Wasim Akram and Shoaib Akhtar and Saklan Mushtaq. I mean, आप नाम लेते हो यार तो आप बैठ के सोचते हो कि how did. So उसका दुख इसलिए भी होता है कि I believe that was a team that was good enough to win that World Cup. Better than the Australian team that won it is what I always say. एंड ऑस्ट्रेलिया का तो वो स्टार्ट था, ऑस्ट्रेलिया का तो वो पॉइंट था वहां पे। परहैप्स वी वुड हैव क्रश्ड देम देयर, तो शायद ऑस्ट्रेलिया बनता भी ना. Do not bata, because Steve Watto has mentioned that he would have been sacked had they not made the World Cup finals. उन्होंने तो अगले जो अपना आपके लिए ब्लूप्रिंट बनाया और जो कुछ डाला was only because of that success. एक और भी जो बात अब जिसमें बता रहे थे उसमें ये भी आता है कि इट्स नॉट जस्ट अ टीम जिसमें यंगस्टर हैं, इसमें वर्ल्ड कप विनर्स खेल रहे हैं. सो दैट्स वन थिंग कि आप सारे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस या 96 का आप हारे हुए हैं, बट यू हैड पीपल लाइक मोइन एंड वसीम जो जीत चुके थे वर्ल्ड कप. एजाज अहमद वाज देयर, सलीम मलिक वाज देयर, Mushtaq इंजमामुल Ahmed हक was वाज there. देयर, Yes. मुश्ताक अहमद. तो ये सारे वो लोग हैं जो कि जीत चुके हैं और अपनी पीक टच कर चुके हैं. But alas, it was not meant to be. It But was sir, I not. think we should wrap up our today's episode. Thank you so much for your Sir, time thank you. and insights. और जिस तरह वर्ल्ड कप आगे आता रहेगा, हम बाकी एपिसोड भी रिलीज कर रहे हैं. So hopefully we'll be able to give you good trauma till we start the World Cup. पाकिस्तान का
क्योंकि अगर हम 92 का वर्ल्ड कप स्टार्ट करेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा कि हम 74 पे आउट हो गए थे, तो लॉट ऑफ पीपल विल बी शॉक्ड कि अच्छा ये क्या हो रहा था। बट और सर ये थैंक यू क्या सो क्या मच। कैसे? थैंक यू अमाल भाई, प्लेजर एज थैंक यू। ऑलवेज। खुदा थैंक हाफिज। यू।